Assalamu alaikum, dear students, my dear students of class 8. You guys are quite clear about the fact that we're dealing with this chapter stars and solar system. And in the last video lecture, we have discussed about the second heavenly body, that is the sun. In that video lecture, we came to know that sun is actually the nearest star from the earth. Okay, beta. It's about 150 million kilometers away from the earth, and as far as its mass and brightness is concerned, it's regarded as the medium order star. The second nearest star to the earth is Alpha Centauri, which is about 4 crore 6 lakh 78,000 million kilometers away from the earth. This was the brief introduction regarding the previous lecture that we had discussed. Today we are going to continue this topic. Okay, we'll be dealing with some questions regarding the sun. The first question which we are taking is how much big is sun as compared to the earth. यहाँ पे इसकी साइज, सन का जो साइज है उसकी बात चल रही है. कितना बड़ा है सन एज कम्पेयर टू द अर्थ. सिंपली बहुत हैवी है, बहुत बड़ा है. इट्स बिगर इन साइज. एज फॉर इट्स डायमीटर इज कंसर्न, डायमीटर ऑफ सन इज 14 lakh kilometers. This is the dia of sun. Dia, the longest chord of the circle. अगर मैं सर्कल की बात करूँगा, suppose this is a sun, its diameter is 14 lakh kilometers. Okay, beta, which is about 109 times the dia of Earth. 109 times. Suppose diameter of the Earth is x kilometers. Okay, and dia of sun is going to be 14 lakh into x. 14 lakhs. अगर हम इसको multiply करेंगे with the 14 lakh, are you getting me? This is the diameter of what? Sun. So which is about 109 times the dia of Earth. So you can recognize how much is the size of the sun. Okay, beta. And हमें ये इसका diameter जो है by the naked eye it looks quite small because of the very enormous distance from the earth, which is about 150 million kilometers. But still the sun is regarded as the medium order star. Okay, are you getting me? So as far as its heaviness is concerned, it's about 30 lakh times heavier than earth. This is the fact regarding the size of the sun. So it's quite big. The size of the sun is quite big as compared to the size of the earth. It's about 109 times the dia. Its dia is about 109 times than earth, and it's about 30 lakh times heavier than earth. So this is quite surprising, quite astonishing. Okay, तो sun बहुत ज़्यादा बड़ा है as compared to the earth. ठीक है. Number second question that we are going to discuss here, I am writing the second question is, अब जो distance है, what is the distance from the sun to the moon? That's about 150 million kilometers. Okay, हम distance के units क्या रखते हैं? यहाँ पे जो kilometers हैं, this become these million kilometers. Are you getting me? Million kilometers, इतना बड़ा unit जो हम नहीं लिख सकते यहाँ पे. Million kilometers, इसको हम ऐसे measure नहीं करते in terms of kilometers. Are you getting me? So इनको हम measure करते हैं in terms of light year. In terms of जो distance होती है from the earth. Okay, distance of the sun from the earth is measured in terms of light year. In terms of, because इनकी जो अब मैं स्टार की बात, सन की बात यहाँ पे नहीं करूँगा. सन को तो दिस इज रिगार्डेड एज द नियरेस्ट स्टार. अगर मैं दूसरे स्टार्स की बात करूँगा, सपोज अल्फा सेंचुरी है, दैट्स अबाउट ह्यूज डिस्टेंस, एन एनॉर्मस डिस्टेंस अबाउट फ्रॉम द अर्थ. ओके, उसको हम कैसे मेजर करेंगे? दिस इज क्वाइट, वो तो 4 crore 6 lakh 78 million किलोमीटर्स दूर है फ्रॉम द अर्थ से. सो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके यूनिट्स क्या है? ओके, सो यूनिट्स ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स, not general, I'm not talking about the sun here. I'm talking in general, distance of stars from the earth is in terms of light year. ठीक है. अब लाइट ईयर होता क्या है? देखो बेटा, लाइट ईयर, ठीक है गोबर,
इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय लाइट एट द स्पीड ऑफ, आपको पता है लाइट की स्पीड क्या है, दिस इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 30 करोड़ डिस्टेंस कवर करती है लाइट। अगर इसको मैं किलोमीटर में चेंज करूंगा तो 3 × 10⁻⁵ आएगा किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो it is the, what is the light year? I have to define the light year. Light year is actually the distance traveled by the light at the speed of this. अब speed जो given है, speed ये होगी। So light year is actually distance. ठीक है गोबर, light year is actually distance. So distance आपको पता है speed is equal to distance divided by time. So यहाँ पे distance में निकाल सकता हूँ, so distance will be speed into time. ठीक है, सो डिस्टेंस, अब यहाँ पे मैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप आई एम गोइंग टू डिफाइन द लाइट ईयर। लाइट ईयर इज एक्चुअली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट एट द स्पीड ऑफ, यस, एट द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन, अब टाइम क्या है, इन 1 ईयर, एज इट्स मैंशनड हियर ईयर, यहाँ पे जो ईयर मैंशनड है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इन 1 ईयर। सो व्हाट इज स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ meter per second. So light year can be defined as the distance traveled. It is the distance traveled by the light at a speed of 3 × 10⁸ meter per second in 1 year. In 1 year. अब कितनी डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस अब यहाँ पे मैं लिखूँ d will be equal to, दैट मीन्स d और 1 लाइट ईयर। अगर मैं यहाँ पे t रखूँ 1 लाइट ईयर तो d will be equal to 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, आई हैव टू कैलकुलेट दैट। सो d विल बी इक्वल टू s इंटू टी, s क्या है, s विल बी इन द फॉर्म ऑफ, यस, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, दिस इज द स्पीड। अब पर सेकेंड है, दैट मीन्स आई हैव टू चेंज दिस टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स। यहाँ पे टाइम क्या है, 1 ईयर, सो दिस मीन्स 1 ईयर में कितने सेकेंड्स आएंगे, आर यू गेटिंग मी? सो फर्स्ट 1 ईयर में आपको पता है 360 डेज आते हैं। ओके, एक वन डे कंसिस्ट्स ऑफ 24 आवर्स। ओके, 1 hour consists of 60 minutes and 1 minute consists of 60 seconds. These are the number of seconds constituting 1 year. 360 into 24 into 60. अब मैंने यहाँ पे टाइम को क्यों कन्वर्ट किया 60 में, सेकेंड्स में, सॉरी, बिकॉज यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड, तो आई हैव टू चेंज दिस क्वांटिटी ऑफ 1 year in terms of time, in terms of seconds. सो अगर ये सॉल्व करेंगे तो 1 लाइट ईयर जो होगा हमारा d विल बी इक्वल टू 9.46 into 10⁻12 kilometers. Okay, this is the distance traveled by the light at a speed of 3 × 10⁵ kilometer per second in 1 year, and this is called as light year. ठीक है, so light year is what? It is actually the distance which is traveled by the light at a speed of 3 × 10⁸ meter per second or 3 × 10⁵ kilometers per second. ओके, इन 1 year, in 1 year। फिर उसका हमने क्या किया, फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस यहाँ पे लाइट ईयर का होगा, एज वी आर कंसिडरिंग इट एज फॉर द लाइट ईयर कॉन्सेप्ट। लाइट ईयर विल बी इक्वल टू 1 लाइट ईयर विल बी इक्वल, अगर 1 लाइट ईयर होगा तो यहाँ पे 1 year आएगा, तो 1 year को हमने चेंज कराना है किसमें, कितने सेकेंड्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। सो हमने यहाँ पे लिखा 360 into 24 into 60 into 6, and upon solving this is the actually light year. That is the distance which is traveled by the light, but speed क्या है, at this speed it travels इतनी much distance in 1 year, but speed होगी 3 × 10⁸ or 3 × 10⁵ kilometers per second. ठीक है, this is about the light year concept. Okay, and this was the